नमस्कार, बजट ऑफ होप के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र और आज सुबह से ही हम बजट 2015-16 पर तमाम विशेषज्ञों के साथ डिटेल्स में जाकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश को मिला क्या अगले साल के इस बजट से। और अगले 2 घंटे बहुत ही अहम है क्योंकि पूरी वित्त मंत्रालय का खास पैनल हमारे साथ होगा। आपने देखा वित्त मंत्री को सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर एक्सक्लूसिव लोकसभा टेलीविजन के जरिए, आपने देखा टॉकेथॉन पहली बार जो कि सोशल मीडिया के जरिए और टेलीविजन प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके पूरे देश तक पहुंचा और पूरे देश से सोशल मीडिया पर जो सवाल आए उनका वित्त मंत्री ने सीधा जवाब दिया। और अगले 2 घंटे के दौरान हम वित्त मंत्री के तमाम ऑफिशियल्स के साथ उन बड़े सवालों को आपके लिए रखने वाले हैं जो इस बजट से उभरे हैं। मैं हूं अजय मिश्र, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी मार्क पैट्रिक। Namaskar. Yes, and the Finance Minister, Mr. Arun Jaitley, presented this budget today in the background of a lot of hope and expectation. And we need to find out whether those expectations have been met, whether this is a growth-oriented budget, whether it puts us on that high growth trajectory. And we're very privileged to have with us the people behind the budget. We have with us the Finance Secretary of India, Mr. Rajiv Mehrishi, who's joining us, and Dr. Arvind Subramanian, Chief Economic Advisor. We'll start with you, Mr. Mehrishi. In the context of the Big Bang expectations and the reform agenda, etc., that was being talked about in the media, have we delivered in this budget? No, Big Bang is a concept that is, media created. I don't think anybody from the government gave any indication. As a matter of fact, the CA's economic survey yesterday very clearly said that we shouldn't be hoping for a Big Bang reform for a variety of reasons. So I think on the whole, there has been what is positive is that it's incremental in the right manner. It is balanced across different sections of society, and it looks after both the investment and infrastructure needs as well as the needs of the disadvantaged and the people without social security. तो सर, जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं और जो इकोनॉमिक सर्वे ठीक पहले आया बजट से, उसके बाद बजट का भाषण तैयार करना और बजट की जो तमाम सिफारिशें हैं उनको देश के सामने रखना क्या एक बड़ी चुनौती थी? चुनौती कई तरीकों से थी। समय की भी कमी थी, वो भी प्रेशर था, लेकिन हर 5 वर्ष में ही ऐसा होता है कि बजट और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट साथ साथ होती है। और इस बार तो वित्त आयोग की जो सिफारिश थी बहुत हटकर थी, तो उससे भी काफी बदलाव आया। उस बदलाव के कारण भी कुछ ज्यादा उसमें काम करने की आवश्यकता पड़ी। तो चुनौती मतलब एक्स्ट्रा वर्क की वजह से भी थी, और जो चुनौती हुई एक्स्ट्रा डेवोल्यूशन से, अधिक पैसा जाने से राज्य से, वो अलग चुनौती थी। उसको भी देखना जो है आवश्यक था। लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं कि शायद इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे पॉइंट्स को बजट में जगह मिली है, और यहाँ पे जरूरी हो जाता है जो अथर इकोनॉमिक सर्वे के उनसे पूछना भी कितना खुश है वो, क्योंकि उनकी सिफारिशें बहुत कुछ बजट में दिखाई देती हैं। Right, Dr. Subramanian. A lot of what you did mention in the economic survey has been reflected in the budget. But, with regard to actually the Finance Commission's recommendations, how did it make the budget-making exercise more, let's say, tight or difficult for you? Yeah, I think that the Finance Commission recommendations really had a major impact on the budget because, it squeezed the envelope available for meeting the various objectives, some of which the Finance Secretary outlined. And so the budget definitely, the targets, the composition of the budget should be seen in the light of what is this really big, tectonic shift. We've spoken about the Finance Commission and the impact it's going to have on Indian federalism. But one consequence of that was the space for the centre had been reduced quite considerably, and the Finance Minister mentioned the number in his speech about 1.26 lakh crores were squeezed. So we had to, the budget had to do with fewer resources. That's what made the task of balancing the needs of the poor, the need to boost investment, the need to maintain fiscal discipline. All of these had to be done together, and I think that's the context in which the budget should be assessed. लेकिन सर, आपने मेरे ख्याल से ऐतिहासिक दो चीजें बहुत ऐतिहासिक थी आपकी इकोनॉमिक सर्वे में। पहली
कि आपने सभी भारतीयों के लिए एक सिक्योरिटी नेट की बात की जो हम लोगों ने अभी तक कभी भी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं देखा, और दूसरा जो आपने जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए सब्सिडी को रैशनलाइज करने यानी जो लाभार्थी है उस तक लाभ पहुंचाने की जो बात की, वो बजट में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हुआ। तो आपको लगता है, और शायद जीएसटी भी, जिसकी थोड़ा सा आपने एक तरह से आलोचना की थी अपने सर्वे में, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुआ रोड मैप, आपको लगता है कि ये 3 बड़े रिफॉर्म हैं जो देश को ग्रोथ और रोजगार के रास्ते पर ले जा रहा है? Rajiv, why don't you? I'll answer the JAM, but why don't you answer the social insurance? देखिए, बेसिकली एक जो सबसे बड़ी जो चुनौती भारत के सामने आज है, और इसमें मैं दाद दूंगा वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता की जी, कि जिस देश को हम आज यंग देश कह रहे हैं, यंग भारत कह रहे हैं, ये कुछ चंद सालों में, 20, 30, 40 सालों में, जो कि एक बहुत अल्प समय है, में ये सब जो है, ये पेंशनेबल या पेंशन जो है, उस एज में ये लोग आने वाले हैं। इतना बड़ा पॉपुलेशन का जो हिस्सा है, तो एक जो चुनौती सबसे बड़ी वो ये है कि वो आज इस बात को सोचा जाए कि 30 साल बाद इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब पेंशन योग होगी, जब काम करने योग नहीं होगी, तब उनको उनका जो डेली रिक्वायरमेंट है या उनकी मंथली रिक्वायरमेंट जो है, उनका जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो कैसे मीट की जाएंगी, कैसे वो मिले, कैसे पाई जाएं वो। तो उसका तो अपनी आज एक, अगर जिस तरह से हम चल रहे हैं वैसे चलते रहे तो अपनी एक पेंशनलेस सोसाइटी बनेगी, तो उसको पेंशन सोसाइटी बनाना आवश्यक है। तो इसलिए एक जो सबसे बड़ा इसमें जो मुख्य बिंदु है वो अटल पेंशन योजना का है, जिससे कि हर व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है। Right, Mr. Maharishi, also with regard to the tax reforms that were talked in this budget, with regard to direct taxes, bringing down corporate tax down and, bringing it down to 25%, and then that cess that you're adding, or not the surcharge that you're adding to people who earn more than 1 crore rupees. What's the rationale behind this sort of thinking? See, the finance minister clarified in his budget speech that he was abolishing wealth tax because of the difficulties it was creating in administration. Sure. For about 950 crores of collection of tax. So abolish wealth tax but tax the wealthy. So basically it was still to get tax out of the wealthy. So wealthy have not been let off the hook. They're on the hook but in a different fashion. So basically that is the rationale, that let's not go in this roundabout manner to tax the wealth. Sure. Let's tax it directly onto the incomes itself. And with 25% corporate tax, are we likely to see a lot more tax compliance? Because the minister was mentioning also about the number of litigations that are involved with exemptions. Competitive, that's, exemptions are per se, I would say per se bad. Theoretically they are bad. And basically the idea should be to reduce both the rate and the number of exemptions to as near zero as possible. Basically, as the FM finance minister pointed out in the budget speech, we need to have internationally competitive tax rates. Only then can you have, otherwise, you will neither have investors coming in nor retaining your own investors also. A lot of investment of India may take place outside. So basically you have to have an internationally competitive tax rate, which is what is being aimed at by FM's announcement. Incidentally, lower tax rates also means that there will be better compliance and therefore hopefully less black money, which is a problem that we are facing in any case. So that's the I want direction. to come back to the two game-changing reforms जो आपने कहा. I think in the survey as well as in the speech, we spoke about JAM, जो जनधन, आधार, and mobile. So that should be seen along with the pension as what the government is trying to do to protect the most vulnerable and poor people. So, and in the case of the JAM thing, the aim is very much to not to reduce subsidies, as the FM said, but to rationalize cut leakages. Cut leakages. And one of the things we showed in the survey is
if you look at all the subsidies that are being created, you will see that it's, the really bang for the buck that you get in terms of reaching those who you need most is actually not that good. So I think that's why the JAM could be a potential game changer. And the same is true for the GST. If we get the GST, we could get a common market. Again, we could get better compliance, less black money, because the VAT, the GST system, there's kind of natural compliance, because if one person wants to get a credit, then he has to have the documents, and the previous person has to keep the documents. So it's a very and of course it's going to provide buoyancy to our tax revenues going forward. So these two could be really game changers for the Indian economy going forward. Right, Dr. Subramanian, also, people look for this budget is to see how it meets the needs of various people and cross-section of society. And though the minister mentioned in his speech, the allocations for SC 30,000 something crores, ST 19,000 something crores, and women 79,258 crores. Actually, one couldn't find out what this was actually being spent on. Is there some sort of idea you could give us? No, I don't have details. Details, right. Yeah. But I think there's one broader point that, at least as an economist, I'd like to stress, is that I think when we talk about helping the poor, there are two ways of doing it. One is kya schemes, right. This scheme, that scheme, this money. But the other is what is being done to create growth and jobs, for which is going to help everyone, especially the poor, and so on. So I think from that perspective, one way of looking at the budget is, what is it doing for investment, public and private? So public investment has got a boost, 70,000 crores, maybe more through other forms. And for private investment as well, the vision on the tax rates, that's one. Developing financial markets, that's another. Changing bankruptcy laws. So creating the environment for boosting private investment. So there are two pillars which ultimately, we have to believe that this is going to help the poor as much as anyone else in society. सर, इससे पहले कि हम राजीव जी से पूछें कि 2022 तक जो भी रोड मैप इस बजट में दिखा है वो आइडिया किसका था, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि 2022 तक जब हम ये कहते हैं कि सभी के पास एक घर होगा, उस घर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, उसमें पीने का साफ पानी मिलेगा, हर घर में टॉयलेट होगा, हर घर सड़क से जुड़ेगा, सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पाएंगी. एज एन इकोनॉमिस्ट ये कैसे होगा, कैसे डुएबल है, कैसे अचीवेबल है, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस लगता है जब आप इतने बड़े देश को देखते हैं और इतने बड़े पॉपुलेशन को देखते हैं. I think the first thing is that it's good to have a vision like this. One of the things that the budget says is that we have to think in terms of quantum jumps. Not 1% 2%, just quantum jump, and that's a good vision to have. Now, how realistic that we will reach that will depend upon the effort that we put in. And the effort, as I said, has to be two. If you can provide growth and jobs, I think that's going to help. And the other is, if can we improve our delivery of services, housing, education, health. And I think that is where I think the 14th Finance Commission has a big role to play, because now these decisions on what to spend on, how to spend, the accountability of those decisions is being moved closer to the people. So I think that can have a really important impact in realizing this 2022 vision. Mr. Mehrishi, under the Ministry of Finance and Budgets at a glance, there are a lot of these expenditures which have been mentioned, which one, probably thought they were going for schemes, like there's special assistance to NITI now is 20,000 crores, transfer to NSSF or for unorganized sector workers, some 607 crores. Nirbhaya Fund also comes under. Is it all being handled by the Finance Ministry, or why is it being put under the Finance Ministry? No. NITI probably, is it because the plan is still in place? No. The 12th plan. Basically, these are entries which are technical in nature because they are in budget heads. Right. But NSSF is handled entirely by the Ministry of Finance. And NITI is an allocation now which ultimately will have to be spent by NITI. So it doesn't matter what head it is in, Okay. If this head also, the other ministry can be given, other department can be given the right to operate that head. It's a routine thing in the government system.
So actually these entries by themselves are not very indicative, but the money that is being kept apart for Niti is actually for select interventions in areas and states which might need special attention, especially if there is a need which arises which has not been foreseen today other than disaster. सर, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि इस बजट का फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, और जब हम बजट को देखते हैं तो केवल एक साल के लिहाज से देखते हैं, लेकिन इसमें विजन दिखाई देता है 2022 तक का, उसके पीछे की सोच क्या है, और ये एक संयोग है कि वित्त आयोग की सिफारिशें, इकोनॉमिक सर्वे और नई सरकार का पहला पूर्ण बजट एक साथ बना है, तो ये दिशा क्या इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, बेसिकली वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा कि मेरा जो बजट है वह एक रोड मैप दिखाएगा, एक डायरेक्शन दिखाएगा, और वो रोड मैप और डायरेक्शन रखने का प्रयास वित्त मंत्री जी ने किया है। जहां तक वित्त आयोग का सवाल है, वित्त आयोग की सिफारिशें मानने से केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर इंगित कर दिया है कि जो बात होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, वो वास्तव में अब साकार होगी, और वो जिस स्पिरिट से नीति बनाई गई थी उसी स्पिरिट से सरकार ने 42% डेवोल्यूशन के लिए सहमति दी है। तो उससे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का माहौल बनेगा, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ये बनेगा कि स्टेट्स भी जो हैं वो आपस में compete करेंगी कि कौन बेहतर कर सकता है। Dr. Subramanian, what's the larger idea behind monetizing gold? Well, the larger idea is that Indians have this fascination for gold, and remember that contributed a big part to the crisis that we almost had 2013. The current account deficit. And the aim is to put this kind of dormant asset into the service of the economy, because it's a kind of saving that's not easily intermediated into investment. So the point is, can we convert this physical saving into financial saving and deploy it? So these schemes, which the finance secretary actually knows in greater detail, the conceptual thing is to convert physical savings into financial savings, and and boost credit, boost financing for investment. That's the conceptual vision behind it. सर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आपने इकोनॉमिक सर्वे में कही, 8.1 से 8.5, एग्जैक्टली वही एजम्पशन, बजट एजम्पशन में भी उसका इस्तेमाल किया गया। आपको लगता है कि ये बजट एक आधार रखता है, एक बुनियाद रखता है, जो डबल डिजिट ग्रोथ की आपने बात की है, और क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? ये बजट क्या एक फंडामेंटल बेसिस तैयार करता है उस चीज का? हाँ, आई थिंक द फंडामेंटल बेसिस इज creating the conditions for growth, more public investment, better conditions for private investment, because I think if you look at the history of fast-growing Asian economies, long-run double-digit growth is only based on increasing investment. You can't get long-run growth based on consumption or the domestic market, and so in that sense, this budget moves the economy in that direction. Of course, we have to solve the problem of private investment per se, because that's still stuck and weak to some extent. But in the meantime, we can start the capex cycle by doing the things that the budget is trying to do for public and private investment. Dr. Subramanian, what is the idea, this Krishi Unnati Yojana? This is an umbrella Yojana of all the other previous schemes that was run under agriculture, which had the soil health card, the integrated scheme for agriculture cooperative marketing, the national mission for agriculture extension, horticulture price stabilization fund, etc. And we asked some agriculturalists here. They said that, what is this? I mean, you've given us an allocation of 3,757 crores for all these schemes. That's not enough, sort of thing. How would you answer that, sir? See, the figure actually is 5,300 crores actually. And the FM in his speech has said that he intends during the year to hike it by another 3,000 crores. But you see, the problem that historically that has been inherited by everybody is that there has been a plethora of schemes that has been created all the time. Sector, yes. So what happens in every sector? So what happens is that there's an endless number of schemes.
some of 10 crores, some of 1,000 crores, some of 100 crores. You'll find all kinds of schemes. So basically, the thought process behind this is that club them into one umbrella scheme and let them do several themes so they are easy to monitor, easy to allocate budget for. There won't be problems of, this scheme mein 15 crore kharch nahi hua, so can I transfer it to another scheme? There won't be problems like that. So that is the basic thought process behind clubbing these. Right. Secondly, now all allocations for centrally sponsored schemes now have to be looked at with a different light altogether. Because basically, I would like to draw the attention of everybody here to para 7.43 of the report of the Finance Commission, which clearly says that it has considered this planned expenditure to be part of state expenditure. Okay, right. So really speaking, what the government of India is doing is it did not have continued many of these schemes, it is continuing them. Right. It is still supporting them, but a 50% or a 60 or a 40% ratio or a 60% ratio would have to come from the states. So really, in that sense, the allocations need to be doubled all the time. Absolutely, and I think I stand corrected because I've looked at the combined list and it goes up to about 9,000 crores as a result of that. सर हमें मालूम है आपके पास वक्त कम है, इसलिए अब हम आपसे अंत में ये समझना चाहेंगे कि क्या अब सरकार की दिशा ये है, क्योंकि बजट में हमें बहुत सारे स्कीम्स के नाम नहीं दिखाई देते हैं, रेल बजट में नई रेलगाड़ियां नहीं दिखाई दी, तो क्या अब दिशा इस बात की ओर के कम से कम स्कीम रखी जाए, डिलीवरी पर ज्यादा फोकस किया जाए और लीकेजेस जो हैं वो कम से कम रखे जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी इज द की वर्ड गोइंग फॉरवर्ड? इसका जवाब तो एक शब्द में है हाँ. Exactly. Right. फाइनल क्वेश्चन टू सी Dr. Subramanian, so, people were trying to talk about this budget, the most awaited budget since, let's say, 1991. And people are generally happy, all across. But people, temper it down a bit, like you were saying yesterday about, go down a little bit on your expectations for Big Bang. But in the light of what you said, the sweet spot and the right time, etc., for unleashing whatever we had to unleash, did we do enough? So I think there are two ways of thinking about that, right? One is that there is a sweet spot. Having said no Big Bang, etc., there is a sweet spot because there's a big political mandate for change. The international environment is quite favorable to India. So the question is that have we done enough to kind of steer this massive super tanker that is the Indian economy, Right. In the right direction? And there's only kind of some amount that you can do. And I think the budget, moves it in that right direction. I think the second thing is that, this moment that we speak about is not, 1 day or 2 days, right? This is a moment which is more a period for this government, in the next 1 or 2 years to seize that opportunity. And so, as the finance minister said in his speech, we are a round-the-clock, round-the-year government, right? So in some ways, this is 1 day, it's an important day, it spells out a vision, and as you said earlier a little bit, a lot is going to depend upon implementation and delivery, and if you can do that, I think then we're heading in the right direction. So sir, finally, how do you define this budget in your own words? Maybe a single word? I would say moving in the right direction, balancing competing objectives in a very reasonable manner, and moving this ship in the right direction. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन और राजीव महर्षि जी, देश के वित्त सचिव, इस खास कार्यक्रम में डीडी न्यूज पर खासतौर पर वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सीबीडीटी के चीफ और सीबीईसी के चीफ, यानी डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं, कुछ बड़े सवाल हम रखेंगे सीधे अधिकारियों के पास जिन्होंने खुद इस बजट को तैयार किया है. आप देखते रहिए खास कार्यक्रम बजट ऑफ होप. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट ऑफ होप, और जैसा हमने आपसे ब्रेक से पहले वायदा किया था कि हम वित्त मंत्रालय के दो बहुत ही खास मेहमान को लेकर के आपके साथ फिर से रूबरू होंगे. इस वक्त हम हाजिर हो चुके हैं. सीबीडीटी के चेयरपर्सन अनीता कपूर जी हमारे साथ आ चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में खासतौर पर वक्त निकालने के लिए. और कौशल श्रीवास्तव, सीबीईसी के चेयरमैन, भी हमारे साथ डीडी न्यूज के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी.
मैम, शुरुआत अभी से। इस बजट में पहली बार हमने देखा कि जो काले धन को लेकर के जो तमाम सवाल देश भर से किए जा रहे थे, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश, खोजने की कोशिश जरूर की गई है। देश के भीतर काले धन को रोकने के लिए, देश के बाहर जो काले धन को रोकने के लिए 2 अलग अलग बिल्स की बात की गई है। क्या वो इसी सेशन में आ रहा है? देखिए, देश के बाहर के काले धन के लिए एक नया एक्ट बनाया जा रहा है जी। और देश के अंदर के काले धन के लिए कुछ हमारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं जो टाइटन हो रहे हैं, कुछ हमारे रूल्स टाइटन हो रहे हैं, कुछ हमने लॉ में चेंजेस कर दिए। तो डोमेस्टिक ब्लैक मनी के लिए कोई नया कानून नहीं बन रहा अलग से, बट एग्जिस्टिंग प्रोविजंस आर बीइंग टाइटन। पर जो बाहर का पैसा है उसको देश में वापस लाना है और इसके अलावा ऐसा सिस्टम लगाना है कि आपकी कॉस्ट ऑफ secreting assets abroad should be so high in terms of punitive taxes, penalties, prosecution, that there should be no incentive for secreting assets abroad. तो ये लेके मुहिम लेके चला गया है कि इस तरह का एक्ट लाया जाए कि बाहर कोई पैसा पहले रखने में इंसेंटिवाइज नहीं हो, और अगर रख ले तो फिर हमें पता लग जाए तो वो 300 गुना पेनल्टी लगेगी उस पे। जो टैक्स लगता है 300 गुना पेनल्टी, मतलब हाँ, 3 गुना 300%, 3 गुना पेनल्टी लगेगी। सॉरी, तो एक तरह का कॉन्फिस्केशन हो गया जी। टैक्स लगा और उसके ऊपर 3 गुना पेनल्टी लग गई। 10 साल की आपने सजा का प्रावधान किया है। बिल्कुल। अगर कोई टैक्स फाइल नहीं करता है, रिटर्न फाइल नहीं करता है फॉरेन एसेट्स में, तो 7 साल के लिए जेल में वो चला जाएगा। जेल में चला जाएगा, क्योंकि हमने देखा जैसे HSBC का इंफॉर्मेशन आया, पता तो लग गया बैंक अकाउंट है, पर उसमें कितना पैसा है, कब वो पैसा लगाया गया, हमको पता नहीं लग पा रहा। द वेरी फैक्ट कि उसने बाहर अकाउंट मेंटेन किया, इसीलिए उसको एक सेपरेट ऑफेंस बनाया जा रहा है। क्योंकि कंसीलमेंट की पेनल्टी तो लग सकती है अलग से, वो प्रोसिक्यूशन 10 साल का हो सकता है, पर उसमें हमको अमाउंट चाहिए कि कितना अमाउंट उसने जो है कंसील किया है बाहर में, और उसमें थोड़ा ओनर्स डिपार्टमेंट पे ज्यादा हो जाता। अब यहाँ पे द वेरी फैक्ट कि आपने एक बाहर अकाउंट रखा जिसको आपने हमें डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हम रिटर्न के परफॉर्मा में कहते हैं कि आपके बाहर के अकाउंट आप हमको दिखाएं, तो उसको भी ऑफेंस बना दिया जाएगा। आई मीन ये जो नया कहा जा रहा है कि ये तो प्रोस्पेक्टिव है, जो आने वाले जो लोग करेंगे उनके लिए डेटरेंट है। जो वाकई पैसा पड़ा हुआ है विदेशों में वो कैसे आएगा, क्या उसके लिए क्या प्रावधान? नहीं, ये जो लॉ है, ये जैसे आपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं पिछले 2 साल से, अगले सालों में रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें एक कॉलम है कि आप बताइए आपके कितने एसेट हैं। हाँ, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा एसेट बाहर है, तो वो पुराने पे भी ये जो टफ रजीम है वो लग जाएगा। But ma'am, is there any sort of incentive for people to, bring money back if they have money abroad, that is, and even though it is illegal? Like they had this voluntary disclosure scheme some time back. I mean, the thing is that people who probably have this sort of thing, they will all, be more afraid to sort of, they'll be more concealing, and there's unlikely that you people will come to know about it if that's the case. I mean, you will have to spend a lot of investigative time and effort to find it. It's a fact that effort would be required. But if you are aware, we are going into internationally into a system of an automatic exchange of information. And there is internationally a consensus that tax evasion is a big ill. Countries are willing to share information. Once that automatic exchange of information system kicks in, you will automatically get information from various countries. Right. So the effort required on a tax administration to go out, seek information, first establish a prima facie case, and then ask the other country to share information. To that extent, our burden is going to be less once the automatic exchange of information kicks in. But your issue on whether there would be a voluntary disclosure program or something, that's a political call. Okay. The minister will have to decide whether he wants to give a compliance window or whether our regime, the way it is so planned to be this information that structured. you are getting now, I mean, and you will get over time, and the defaulters, you will apply these rules, 300% tax on them. You will find, almost confiscate their properties, etc. This will apply to people who have already had money abroad. Yeah, because if you have a bank account
and when this automatic exchange of information kicks in, Sure. that information will flow into us. This is for countries other than US, because US Okay. we are entering into FATCA. Once you enter into FATCA, from the financial institutions based in US, the information will start flowing in with us, flowing into us. So you will have access to information based on which you can come to a conclusion whether the person has disclosed his asset or income to us in his returns or not. Right. And then if he has not, all these punitive and prosecution measures would follow. मैम, जो देश में घरेलू काला धन है उसके लिए जो प्रावधान है इस बजट में, उस पर हम आपके कुछ क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। आपने कहा है कि रियल एस्टेट में कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो 20,000 से ज्यादा आप कैश नहीं दे सकते, मतलब आपको सारा पेमेंट चेक में करना होगा या किसी और लीगल तरीके NEFT RTGS के जरिए आपको भुगतान करना होगा। ये कुछ हार्श नहीं है, और क्या लगता है आपको कि ये प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा? देखिए, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस में जाते हैं, किसी के यहाँ कैश मिलता है जी, मालूम है उसको भी और हमको भी कि ये पैसा बिजनेस से जनरेटेड ब्लैक मनी है जी, पर वो हमको कागज दिखा देगा 2 दिन के बाद, मेरी ये लैंड थी, इसका अगेंस्ट मैंने एडवांस ले रखा। अच्छा, अब हम एज पर आवर लॉ, हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रोविजन है कि आप किसी से लोन नहीं लेंगे बिजनेस पर्पसेस के लिए 20,000 से ज्यादा विदाउट चेक। कैश में लोन नहीं लिया जाता, कैश में लोन नहीं दिया जाता। तो उसी तरह हमने बोला कि ये जो आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें भी कैश मत लीजिए। अगर लोन में आप लेन देन बिना कैश के करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन चाहिए, वो भी 20,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते। तो ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में जहां की हमारी अपनी इंफॉर्मेशन दिखा रही है, सबसे ज्यादा possibilities of generation of black money and use of black money is there. Why Ma'am, not but use this measure? मैम, बजट भाषण के बाद तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं वो अभी तक काफी परेशान होंगे, लेकिन आपने 1 लाख से ज्यादा कोई भी कैश ट्रांजैक्शन पे पैन नंबर क्यों मांगा, वो सूचना क्यों मांगी? मान लीजिए मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए कैश में देने हैं, उस पर भी मुझे पैन देना पड़ेगा, ये सूचना कितनी मदद करेगी आपको? Why not? ये तो एक्चुअली SIT का रिकमेंडेशन था। अच्छा, हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जस्टिस शाह सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर रखी है, तो लुक बहुत सारे इनटू लोगों के पास पैन नंबर नहीं है मैम, जो कि कैश नहीं, में पर डील करते पैन हैं। नंबर लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं आपको, हम 1 हफ्ता में पैन नंबर देते हैं। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आप पैन लीजिए, पैन कोड करिए, और यहाँ कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आप आगे बढ़ एग्जैक्टली, रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि टैक्स के अलावा, आई मीन ये तो एक टैक्स की तरफ से ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, टैक्स के अलावा भी आप दूसरे प्रावधान भी देखिए। तो मिनिस्टर साहब का आइडिया है कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मनी को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा साधन है कि आप एक ट्रांजैक्शंस का ऑडिट ट्रेल रहे। कैश ट्रांजैक्शन में किसी तरह का ट्रेल ट्रांजैक्शन का नहीं रहता। चलिए, तो शायद एक बड़े रिफॉर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ you know, जाएं। जी, बिल्कुल। corporate tax and income tax, it covers about 34 paise of the rupee, according to this chart that you have put in this budget at a glance. You know, so there was talk about trying to increase the tax base. What has already been done to try and increase the tax base in the country for direct taxes? See, over the years, large And such number a few people pay tax over 1 crore. I mean, who declare tax an income of over 1 crore, and those are the people who have to pay now another surcharge of 2%. Yeah. So that probably is unlikely to increase. I mean, the number of people who are declaring tax over 1 crore. No, see, I mean, incomes above we 1 had crore. a system of wealth tax, Yeah. which was cumbersome, a lot of compliance cost for the taxpayer, because we asked them to value their assets, which were subjected to wealth tax. Wealth tax is going, so in place of that, a surcharge is coming. Sure. Now, you should also understand, in this country, we do not tax agriculture income. जी। So when you look at our taxpayer base, you have to see that there's a large population of the country which is 60%, yes, okay. which is earning agriculture income. So what you see as our tax base being too small, you also have to factor in that we live in a society where women are not 100% women are not working. जी। So you have a household, there is one earner, and you have a comparatively large size of family. Sure. So the number of taxpayers will necessarily be less. And you should also see about this 1 crore and above. जी, ma'am. We don't tax dividend. There are a lot of
Sure. taxpayers here who would have income of more than 1 crore, but there is no tax on dividend in their hands. Sure. Dividend is subjected to dividend distribution tax in the hand of the corporate itself. So this figure of people with 1 crore income, if you see it only with reference to what is the income subjected to tax, may also be misleading. मैम, जो आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या फिर गोल्ड लोन के जरिए या सोने के सिक्के के जरिए जो शायद इनफॉर्मल जो गोल्ड इकोनॉमी है उसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की जो कोशिश की है, क्या वो भी एक कदम है काले धन की जो समस्या है उसको टैकल करने के लिए, या इसको केवल आप सोने के मोनेटाइजेशन के रूप में देखें? नहीं, इसको एक इकोनॉमी की ग्रोथ की तरह देखिए कि जो सोना अनप्रोडक्टिव एसेट की तरह पड़ा है, अगर आप उसको मोनेटाइज करेंगे तो वो आगे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा. सो अनप्रोडक्टिव एसेट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस इनिशिएटिव. और मेरे कुलीग जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो आपको बताएंगे कि किस तरह कितना पैसा कंट्री का हम गोल्ड में ब्लॉक करते हैं. Right, let's turn to Mr. Srivastava. Indirect taxation We've been की तरफ talking बात too है. much about direct taxes. In this budget, sir, what, I mean, with regard to Make in India, there have been some provisions to make, manufacturing, to encourage manufacturing, and also there have been other incentives from, by creating credit for them. But in terms of the taxes, what really can be, I mean, what really has been done to incentivize, let's say, a young entrepreneur who wants to start something and he realizes that half the input costs that are going on are so heavily taxed? No, for the domestic value addition and improving manufacture, there are a number of proposals which are there in the budget. One is that the inverted duty structure Right. on the import side, where the inputs carry a higher rate of duty than the final product, Sure. which leads to credit accumulation and increase in the cost of the product. Right. That has been brought down in respect of a number of 22 items. 22 items in various sectors. Sure. Then we have reduced the customs duty on several raw materials, which are inputs for the domestic manufacturing industry. Similarly, there is a duty called special additional duty, which is levied on imports Right. at the rate of 4%, which is in lieu of state taxes. So there we have in certain sectors where the value addition is less, and the manufacturers are not able to use the credit on account of this 4% duty. There that has been reduced to 2% in respect of certain sectors, and in respect of the IT sector, there it has been completely abolished for parts which go into the manufacture of IT products. So there are various measures for incentivizing or for encouraging the manufacturing growth by way of meaning startups also. Right. If they go into meaning there they have to select their particular Sure. field which they want to go in for, and there are various other benefits in terms of लेकिन सर, आपसे जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए आज के दिन वो ये GST. कि मैम, जो थोड़ा सा पैसा एक तरह से जो सरकार का घाटा हो रहा है वो आपके जरिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा हो रहा है और आप सरकार के हाथ में कुछ पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, 12.36 को बढ़ा करके 14% कर दिया. हमारे लिए तो सारी सर्विसेज महंगी हो गई, आपने ऐसा क्यों किया? इसमें एक चीज ये है कि सरकार मतलब हम लोग जीएसटी की तरफ मूव जा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सर्विसेज भी टैक्स होने लगेंगी स्टेट्स के द्वारा, जो कि अभी नहीं टैक्स होती जी. है, और सेंटर और स्टेट का टैक्स मिला करके अभी के रेट से थोड़ा ज्यादा होगा. नहीं, आप कह रहे हैं एक ही सेवा पे स्टेट भी टैक्स लगाएगी और सेंटर भी लगाएंगे, हाँ, वो तो- या कुछ सेवाएं स्टेट के पास नहीं, रहेंगी, नहीं, कुछ सेवाएं नहीं. सेंटर के पास? ये जो जीएसटी में जी. चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो, चाहे वो सर्विसेज का सप्लाई हो,
उस पे जो टैक्स लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक CGST और एक SGST। ठीक एक ही सप्लाई पे दोनों चीज लगेगी। तो आप कह रहे हैं जब दोनों लगाते तो ज्यादा होता, आपने कम किया है 14%। हाँ, हम उसको ग्रेजुअली फेज आउट करना चाह रहे हैं, फेज करना चाह रहे हैं कि अभी जैसे उस आगे जब GST आएगा तो सर्विसेज पे पर्टिकुलरली ये चीज है, बिकॉज गुड्स पे ऑलरेडी स्टेट टैक्सेस लगते हैं। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड दैट यू आर एमिंग, यू आर टारगेटिंग? So we have marginally increased it to 14%, because there is also the requirement of fiscal getting the resources for the government, and as it is the services sector जो है वो मतलब जो GDP है उसका एक बहुत बड़ा अंग है। If we are looking at this moving up, like from 12% to 14% Yeah. and all that, but as when GST does come in, what will actually be the rate of GST? तो जैसे एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट फिक्स किया जाएगा, उसके लिए एम्पावर्ड कमिटी है, उनकी कमिटी बनाई गई थी जिसने अपने सुझाव दे दिए हैं, और उस सुझाव पे जो एक GST काउंसिल बनेगी वो उस पे बैठ के सब लोग निर्णय करेंगे कि कितना टैक्स रेट होगा। तो उसका एक एक्सपर्ट कमिटी है, उससे व्यू लिया जा रहा है। उसके बाद फिर जो एम्पावर्ड कमिटी और GST काउंसिल है वो सब लोग उस पे फैसला करेंगे। और In the interest of inflation, would but there be some exemptions, in GST? इन GST में एग्जेम्पशंस कम से कम रखने की बात कही गई है, बिकॉज एग्जेम्पशंस आने से जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टॉर्शंस आते हैं। उसमें इसलिए जो GST में है एग्जेम्पशंस होंगे, लेकिन कम से कम सीमित कर रखने की बात कही गई है, वैसा किया जाएगा। सर, एक और बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आपने पेट्रोल और डीजल के टैक्सेशन को लेकर के अब क्या दिशा रखी है, क्योंकि आज ही देखें तो पेट्रोल की कीमतों में 3.8 मतलब 3 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, 3 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी डीजल में की गई है। तो अब आगे जाते हुए पेट्रोल और डीजल किस तरह से टैक्स होने जा रहा है? Carbon taxation, I mean, it's has to be all on petrol and diesel itself, right, and all other coal and all these sort of things. पेट्रोल डीजल की जो अब प्राइसिंग है वो डीरेगुलेटेड है, हो चुकी है, मतलब गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है। जी। तो जो जैसी क्रूड प्राइसेस से बेसिकली लिंक्ड है, नहीं, उसको टैक्सेशन जो पोर्शन है, टैक्सेशन को लेकर के क्या दिशा है? टैक्सेशन को लेकर के हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया है। जो टैक्सेशन का ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी था, जितना ड्यूटी का उसमें भाग था उतना का उतना ही है, कोई उसमें बदलाव नहीं लाया गया है। ये But comparatively it is higher because we are saying that we are now moving from a period of subsidizing carbon to taxing carbon, meaning that we are taxing petrol and diesel more than we are subsidizing it. No, at the moment, meaning the duty structure on petrol and diesel, the pricing is deregulated, Yes. and depending on the meaning the what shall I say, over the last 1 year there has Right. been a lot of variation in the crude prices. They That's came right. down The significantly. fluctuations in the prices, Yeah. yes. So the benefit of the decrease in the prices was given to the customer, and on 11 different occasions there was a reduction in price. Only from last few months, on 3-4 occasions, there has been some mop up by way of central excise Right. duty, but the extent of meaning increase in the duty is much less compared सर, लेकिन to. उम्मीद ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आप एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी सी कमी करेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, क्या ऐसा भविष्य में हम उम्मीद करें? और सर्विस टैक्स साइड में क्या आप नेगेटिव लिस्ट को और भी प्रून करने जा रहे हैं और भी छोटी करने जा रहे हैं? सर्विस टैक्स में तो जैसे कि हमारा, मैंने कहा कि हम लोग का एक GDP का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है कि टैक्स बेस को वाइडन किया जाए। तो इस बार भी कुछ हम लोगों ने नेगेटिव लिस्ट को रिव्यू करके कुछ सर्विसेज पे टैक्स में लाए हैं, और जो एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं उसमें से भी कुछ लिस्ट को कम किया गया है।
तो टैक्स बेस बढ़ाने का तो निरंतर प्रयत्न रहता है। फिर टैक्स बेस आपकी तरफ भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है और डायरेक्ट टैक्स साइड में भी कोशिश हो रही है। मैम, ये स्वच्छ भारत सेस की जो बात है वो कब तक लागू हो जाएगा? शायद अभी तो उसकी समय सीमा नहीं है। क्या ये लगने वाला है और लगेगा तो कितना? 2% की आपने कैप रखी है। नहीं, कितना हमारे मान के चले? डायरेक्ट टैक्स में स्वच्छ Indirect tax भारत में? सेस का नहीं है, ये सर्विस टैक्स में है। right. कौशल जी रिस्पॉन्सिबल है Please. इसके लिए। ये इसमें एक एनेबलिंग प्रोविजन लिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया जाएगा। और स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री का एक अभियान है जिसपे कि काम हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया है कि जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो लेकिन अगर सीएसआर के जरिए अगर जुटाई जा सकती है रकम तो शायद ये न भी लेना हो, तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है, लेकिन उसको अभी लागू करना है ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन एक बात तो है शायद कि सीबीडीटी और सीबीईसी शायद इस बजट में और पास आ रहे हैं। हम ये मान के चलें, अभी यहाँ तो एक दूसरे साइड में बैठे हो, लेकिन शायद ज्यादा कोऑर्डिनेशन होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। मैम, नहीं, हमारा कोऑर्डिनेशन शुरू से है, सिस्टर सर्विसेज हैं और डेटाबेस जरूर अलग अलग है जी, लेकिन अब वो शेयर करेंगे। डेटाबेस अभी भी कुछ शेयर करते हैं, पर अब कुछ ज्यादा इंटेंसिवली शेयर करेंगे बिकॉज वी रियलाइज्ड दैट शेयरिंग ऑफ डेटाबेस इज एडवांटेजियस फॉर द कंट्री एंड फॉर बोथ आवर ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए, वो उम्मीद है कि जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है शायद वो भी आप शेयर करेंगे और देश नहीं, में वो जो अभी कालेधन की भी जो समस्या शेयर है होता वो- है। आइडिया यही है कि ये जो सारे इस तरह के एफर्ट्स हैं वो इंटेंसिफाई किए जाएं और डेटाबेसेस का एक्सेस जो है नीड बेस्ड, हमको कुछ चाहिए, इनको कुछ चाहिए, एकदम से अच्छे से शेयर हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिता कपूर जी, इस चेयरपर्सन सीबीडीटी, और कौशल श्रीवास्तव जी, चेयरमैन सीबीईसी, इस खास कार्यक्रम में डीडी न्यूज पर खासतौर पर अपना वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, क्योंकि अभी और भी वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स हैं जो खासतौर पर डीडी न्यूज में बजट के कुछ बड़े सवालों पर आपके लिए वो जवाब आने के लिए तैयार हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए बजट ऑफ होप। Welcome back to our continued coverage of the Union Budget 2015-16, and we are very privileged to have with us in the studio, we have Mr. Shaktikanta Das, who is the Revenue Secretary, Ministry of Finance, and Mr. Hasmukh Adhiya, who is the Secretary Financial Services, and Aradhana Jhori, who is the Secretary Disinvestment. Thank you very much for being with us, sir. आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत हसमुख अदिया जी आप ही से करते हैं, क्योंकि बजट में एक ऐतिहासिक ऐलान किया गया है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, जो कि भारत के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा देने की बात शायद पहली बार बजट के दस्तावेज में कही गई है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आप किस तरह से प्राप्त करने जा रहे हैं और क्या कुछ शुरुआत इस बजट में देखने को मिली? देखिए, बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए 3 स्कीम का ऐलान किया गया है और हमारा मकसद ये है कि हर नागरिक को इंश्योरेंस का एक कवर मिले और हर नागरिक को पेंशन के लिए एक योजना मिले। तो ये इतनी सिंपल और इतनी सस्ती हमने योजना बनवाई है कि लोगों को जरूर इससे फायदा होगा। सबसे पहले तो हमारा एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आदमी सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में इन्फॉर्म कर दे कि मुझे ये स्कीम में जुड़ना है, तो उसको 12 रुपया 1 साल का देना है, महीने का 1 रुपया, और उसको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क का कवर मिल जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी जीवन बीमा की योजना है, जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि साल का सिर्फ 330 रुपया देना है। किसी भी नेचुरल डेथ से भी आपका डेथ होता है तो आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा ना। इस तरह की सिंपल प्रोडक्ट है, कोई इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। नॉमिनी का नाम देना है अपने जनधन बैंक अकाउंट या किसी भी बैंक अकाउंट में, एंड दिस इज ओपन टू एवरीबडी, एनी सिटीजन कैन ज्वाइन इन दिस स्कीम। Our target is कि in the coming months crores of people should join such scheme so that in the eventuality of any deaths taking place, लोगों के पास कुछ अमाउंट रहे, उनके फैमिली को कुछ सपोर्ट मिल जाए। इसी तरह से तीसरी स्कीम जो पेंशन की हमने बनाई है वो भी बड़ी सिंपल है कि आदमी जो है कि चूज करे कि मेरे को 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का कितना पेंशन चाहिए। अगर 5000 का पेंशन चाहिए तो एक 20 साल का लड़का है, अपना कुछ कमाना शुरू कर दिया है, अगर 250 रुपया कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा तो 60 साल के बाद उसको पूरी जिंदगी 5000 रुपये का न सिर्फ पेंशन मिलेगा, उसके मरने के बाद उसकी स्पाउस को भी 5000 का मिलता रहेगा। उसके बाद जो पूरा कॉर्पस पूरी जिंदगी उसने इकट्ठा किया था वो 8 लाख
50,000 का पूरा कॉर्पस उसके बाकी की वारिसदार को मिल जाएगा। इस तरह का एक बहुत अच्छा स्कीम बनाया है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग और जिंदगी भर की मतलब आफ्टर 60 के लिए आपको शांति हो जाए। और थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करें, आपने एनपीएस को भी इस बजट में अट्रैक्टिव बनाया है और जो भी पेंशन योजनाएं हैं दूसरे आईआरडीए या जो दूसरे कंपनियों की या शायद एलआईसी की उनकी पेंशन योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो वो भी एक तरह से टैक्स के लिहाज से और भी ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, तो वो भी एक सामाजिक सुरक्षा का एक जरिया है। या वो भी है, वो मिडिल क्लास के लिए जो हमने 2 स्कीम बनाई है, वो पेंशन वाली, दूसरी वो लोअर क्लास के लिए। जो इनकम टैक्स पेयर है उनके लिए एफएम ने 50,000 का एक्स्ट्रा जो छूट दिया है, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब अभी बताएंगे उसके बारे में। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा सोसाइटी वो पेंशन सोसाइटी हो जाएगा। अभी आज की तारीख में 120 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ लोगों को पेंशन मिलने की स्कीम में है, 6 करोड़ लोग। सो इट इज ओनली 5%. वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम बाय विच एवरीबडी ज्वाइन सम फॉर्म ऑफ पेंशन स्कीम। तो ये इसका मकसद है। Right, Mr. Das, the total revenues that we are going to get from this budget are 14,49,490 crores. Now, I mean, there is also because of the devolution problems, given to the states, etc. Some people need to understand how this revenue is actually shared. You see, the total, numbers you read out, there's a gross tax revenue. Right. And out of the gross tax revenue, as per the Finance Commission recommendation, which the government has accepted, 42% is devolved to the states. It's 42% of the net tax revenue. Now, net tax revenue is basically gross tax revenue minus the cost of collection. भारत सरकार का जो cost of collection होता है, उसका that has to be deducted. And out of that, 42% is devolved to the states, and the remaining amount remains with the center to meet its expenditure. Right. I mean, if I remember right, the minister was saying in the budget that it would go up to about 62% actually goes to the states. How is that actually happening? What he meant was that of the total revenue that is collected in the country by both the state and the center. And also, if you take into account, I'm sorry, let me put it this way. Right. If you take into account the transfers in the plan side also which are happening to the states, then it is actually much more. Right. सर, आगे जाते हुए जो बड़े विजन की बात कही गई है 2022 तक सभी को घर मिलेगा, सभी को पीने का पानी, टॉयलेट, सड़कें, जो तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं हैं सभी तक पहुंच पाएंगी, उसके लिए शायद बहुत मैसिव रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत होगी देश में। तो किस तरह से आगे जाते हुए अगर आप विजन देखें, इस बजट में जो विजन रखा गया है 2022 तक का, आगे जाते हुए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को लेकर के आपका क्या विजन है? इसे 2 पॉइंट्स में इसके बारे में कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये जो हाउसिंग का जो आप बता रहे हैं, इट्स ए पार्टनरशिप प्रोग्राम। स्टेट और सेंटर दोनों का ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है। स्टेट्स को अभी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो उसमें से उनका ये रिकमेंडेशन है कि 32% से 42% इसीलिए बढ़ाया गया है कि उनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्रेशर है उसके लिए। और दूसरा ये पॉइंट है कि कई सारे स्कीम्स जो अभी सेंटर करता है वो स्कीम्स सारे स्टेट्स को ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि स्कीम्स जो होते हैं प्लान साइड में उसका प्लानिंग लोकली हो। ये नहीं कि दिल्ली में दैट वन साइज फिट्स ऑल, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा आगे से। स्टेट्स विल डिजाइन देयर ओन प्रोग्राम। हाउसिंग में भी ये जो एक्सपेंडिचर है इसके लिए भारत सरकार एक्सपेंडिचर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो विल स्पेंड मनी। सो इट विल पार्टनरशिप प्रोग्राम इन द बेस्ट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। रेवेन्यू की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगले साल से जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कहा है, दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी अगले साल से लागू होगा। And GST by its very nature is going to be tax buoyant. It's a win-win for both states and the center. अभी जो सिस्टम है, सेंटर कलेक्ट्स एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और स्टेट कलेक्ट्स वैट, उसमें कई सारे मिसमैचेस है, कई सारे जो टैक्स नेट है उसमें कई सारे जो कहते हैं एस्केप रूट है। लेकिन जब जीएसटी लागू हो जाएगा, टैक्स कॉम्प्लायंस विल बी बेटर, इट्स टैक्स पेयर फ्रेंडली और रेवेन्यू बॉयंसी आएगा। तो इसीलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स टुगेदर ये जो 2022 का जो प्रोग्राम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने स्पेल आउट किया है वेरी मच अचीवेबल है और ये किया जाएगा। Ms. Jori, the target for disinvestment 69,500 crores. What's the roadmap? How are you going to bring this money in? You know, as with other things in the budget, this target is also a very ambitious target.
But we've already started preparing. You know, one thing that we're doing is we're erasing that artificial line of the new fiscal year starts, even though for budgeting purposes you have to do it, but you know, new fiscal year starts, you identify a couple of stocks, start getting them approved, go through the process, and then the last quarter suddenly you have to start maturing the disinvestment. So we've already identified the stocks. We want a seamless transition to the next fiscal year. So you will start seeing disinvestments right from the beginning of the fiscal year, and we've got a big pipeline drawn up already. We've got our approvals, a lot of them in place, and we'll watch the market. When the market for a particular stock is good, then we sell it. So earlier what used to happen, we used to have identified stocks, people knew, you had a process, one by one you did it, and when you started doing it, they started hammering the stock down. So by the time you sold it, it had lost so much value. Right. Also, there was no flexibility. You have 7 stocks, you have to do those 7 stocks. So if the market is, they say, for a particular sector it's not so good, but you've identified those stocks, you still have to do them. So now we've changed the way we do business. One is, we've got a robust pipeline, we've identified a whole lot of stocks, we are getting them cleared and keeping and watching the market. Second is that we'll be doing it throughout the year, not just at the end of the fiscal year. So I think the constraint one thinks is the fact that there's a lot of paper floating around. A lot of banks are going in. Private sectors also lined up quite a few equity offerings. So I think the constraint in this issue will perhaps be that. So, but then the supply side, the government side of it, we are in readiness. And hopefully that as the market is also growing, as investor appetite is growing, so we should be able to be near this very ambitious target. तो मैम इस डाइवर्समेंट के पीछे सोच क्या है, अगर आप हमें ये बता पाएं, और सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें हिस्सेदारी को लेकर के इस वक्त जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है, जो सोच है कि आगे जाते हुए क्या आप उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, कहां तक पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक पार्टिसिपेशन या पब्लिक ओनरशिप कहां तक बनी रहेगी, उसमें क्या दिशा है मैम? देखिए, सबसे पहले सोच जो डाइवेस्टमेंट की है, एक तो खैर रेवेन्यू रेजिंग है ही जी, उसके अलावा ये भी है टू ब्रॉडन द बेस, टू गेट इन मोर एफिशिएंसी इनटू द मैनेजमेंट, और लास्टली आल्सो टू स्प्रेड वेल्थ। कि मतलब हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक भी जो इन कंपनीज से रियलाइजेशन होता है वो भी बेनिफिट करें। तो ये तो डाइवेस्टमेंट के पीछे सोच है। अलावा उसके कहाँ तक जाएंगे, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट तो बजट में ऑलरेडी आ गया है। उसके मैकेनिक्स वगैरह अब वर्कआउट किए जाएंगे कि भाई आप 51% पे रुकेंगे और आगे जाएंगे, किस टाइप ऑफ कंपनीज को लेंगे, वो सब it has to be worked out. Right, ma'am. Purely on economics, where people believe that the public sector, when it's not competing, it does extremely well. But then when it's put into an area where it is competing with, let's say, in telecom, for instance, then the public sector can't compete, or in other areas. And then we are trying to divest these kind of stocks onto the public, and they probably don't find that, even though the public becomes owners of these stocks, they feel that there's the government baggage with it, and the management is not quite, and it's not going to be professionally managed in the future. I'm talking about in the areas of competition. Is this ever thought about in the divestment situation? You've talked of two things. The first thing you mentioned is that PSUs are not well managed, and the second you mentioned is that in the competitive atmosphere, they are not looked at as being competing. As a result of that, people who invest lose money. The two thoughts you put forward. That's the fear in the mind of an investor, yes. And that's there. As far as the PSUs are concerned, I think, in fact, monopolies lead to inefficiencies. And when the public sector has to compete in the market, sure, it's a very positive pressure to improve. So I look at competition as a very positive thing, and that's what the government is looking at. The second part of it, have investors, or will they lose money or whatever? The experience, in fact, is to the contrary. There's not been a single offering done by the government which has not succeeded in terms of subscriptions. So there is a lot of faith. In fact, when government exits completely from a company, sure, that is when investors think twice. As long as government is there, people feel safe. So, it's like, I remember the days when the private airlines had just started coming in. And everybody made a beeline, they had the good food and they had all that frills and all that stuff. And come winter and the fog
started, and then flights were cancelled and they offered nothing. People were at the airports in the night screaming, give us accommodation, give us food, etc., etc., and then they went back to good old Indian Airlines. So, I mean, it's just a small example of when the government is there, it takes care of its own. Right. So- Mr. Adia, you know, with regard to banking, the public sector banks also, I mean, now we're talking public sector again, they don't seem to be, there's the feeling that they're not doing enough. They're not performing enough to their potential. And in the economic survey also, the chief economic advisor seemed to have suggested that, you know, you shouldn't look at all public sector banks as one bank. They're all different, they have their own unique entities, etc. What sort of thinking has been going on banking reforms? First of all, public sector banks have got some onerous task of funding a lot of infrastructure projects in the economy. And also they've been, the government, because they are the government banks, government expects a lot of things out of them in terms of participating in the financial inclusion program of the government, in terms of priority sector lending. Of course, priority sector lending norms apply to all the banks. Yes, absolutely. Now the question is, yes, there is a wide difference between the performance of public sector banks and the private sector banks. There are a lot of governance issues. The board is not sometimes competent enough, or we don't have right kind of people in the board. The selection of MD also we had a limited choice in terms of selection of MD. Now, of course, only yesterday we have announced that for our 5 major PSU banks, we are going to take private sector people also. So they are free to apply for a public sector job as MD and CEO. So that's a major departure. In this budget particularly, the finance minister has already announced that we are going in for constitution of a bank board bureau, which is an autonomous board of 5 independent professionals who will be sort of not only suggesting the right kind of candidate to be selected as MD, but also they'll be giving the strategic guidance to all the public sector banks in terms of what they should do as far as their restructuring, consolidation is concerned. So this entire thing is going to be handled by Bank Board Bureau. And as the finance minister has said, this is the first step in the direction of having a bank investment company. Which is, you know, after 2 years or 3 years or so, we would like to move in for a structure in which there is a single company of the government which is holding all the banking stocks of government on behalf of the government. Is the consolidation of one bank, is it going to be like, you know, let's say there'll only be SBI or something like that? But there'll be a holding company of all the banks. It will be like mother bank, which will try and, you know, use this equity stock of all the PSBs to leverage some more equity for the public sector banks. Because once all this equity is transferred to this banking investment company, which is a holding company, they can leverage this entire stock and raise more money from the market and give it back to the banks. This is the model that we are working on. But that will take some time. It will require legislative amendment also. Right now, the first step is we want to sort of, the government as the owner of public sector banks wants to put in place a professional body which can guide the public sector banks governance. सर, इस आम बजट में आम आदमी के लिए ये सवाल उठता है कि जो महंगाई है और ब्याज दर जिसका खासतौर पर सीधा संबंध होता है, उसकी दिशा आगे जाकर के क्या होने वाली है, और क्या ये माना जाए कि अब इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो कौन करेगा, उस पर एक थोड़ी सी क्लैरिटी, और ब्याज दरों के लिए क्या एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि ब्याज दरों में गिरावट आएगी जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी? ये बजट उस दिशा में क्या कह रहा है? देखिए, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट ये हुआ है कि देश में जितने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, और एफएम ने एक फिगर दिया है कि 5.7 करोड़ ओन अकाउंट एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें एक ही आदमी है खुद अपना बिजनेस चला रहा है या तो 2 आदमी एट द मोस्ट, दे गिव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. टोटल ऑफ 12 crore एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय दिस यूनिट्स. Now this is a big number, but the funding they are getting is very low. Number one, from institutional sources, और दूसरा ये है कि जो भी मिल रहा है वो भी महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है. तो मुद्रा बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी वुड लाइक टू एनकरेज प्रोलिफरेशन ऑफ मेनी माइक्रो फाइनेंस NBFCs at the ground level. We would put in place an architecture in which Mudra Bank, through a network of state level agencies, regional level agencies,
will percolate their funding into the smaller institutions at the ground level, which are close to these people, and they would be making available fund for the small units. And for that purpose, FMS said that we will have a corpus of 20,000 crore to begin with, which will come from the private sector shortfall of banks. And we will also, out of budget, be giving 3,000 crore as guarantee corpus. So out of this guarantee, when the guarantee is given for the loan portfolio to the lower level institutions, including small banks or commercial banks or NBFC, the risk margin will come down. So that means that the smaller institutions, small banks or NBFCs, they would be able to give funding at a very competitive rate. They don't have to build in a large risk margin once the guarantee तो आप corpus is कह रहे हैं कि there. देश में बहुत छोटी छोटी सिडबी जैसी संस्थाएं जो हैं उनको तैयार करने की कोशिश है, जो कि छोटे उद्यमियों को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सहारा देंगी, लेकिन इफेक्टिव ब्याज दर क्या होगी? नहीं, इफेक्टिव ब्याज दर क्या होगा वो मार्केट डिसाइड करेगी, बट आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि इन लोगों को तो 20%, 25% इंटरेस्ट पे ही मिल रहा है. कोई कॉमर्शियल बैंक तो इनको दे नहीं रहा है, तो इनके लिए एक अलग से अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा. और इतना तो नहीं होगा, इट वॉन्ट बी वेरी दिस थिंग ऑल्सो, बट वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस 24%, 25% at which they are borrowing to a much smaller interest rate, you know. और We इससे- can't exactly predict what will be the interest rate. ऑब्वियसली सर, लेकिन मॉनेटरी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो क्या चीज है, और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है क्या वो आरबीआई करती रहेगी या फिर सरकार उसमें इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी, आरबीआई उसको फॉलो करेगी? देखिए, ऐसा है कि मॉनेटरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक साइन किया है आरबीआई और सरकार ने, आज जो एफएम ने अनाउंस किया है, तो उसमें ये होगा कि देयर विल बी ए सेपरेट मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क which will be followed, and the committee will look at that entire thing. Now, I don't have more details of it, ki who all are there in the committee. That is actually a subject matter of the Department of Economic Affairs. But yes, I know broadly कि RBI and government has agreed to sign a monetary framework agreement. ब्याज दरें मानी जाए कि आने वाले दिनों में कम हो सकती है, क्योंकि ये एक सवाल आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. Actually, yes, it is possible, because in any case the real interest rates have already come down. It's only a question of policy rate being reduced, which I am sure RBI will look at it at appropriate time. So with regard to, the efforts to bring back black money and all the stringent, punishments that have been announced today, what is the thinking, rationale behind it, and, what's the philosophy and how is it going to be implemented? See, black money has been under public debate for a very long time, and through you I want to tell your viewers Right, absolutely. that not only it has been under public debate, but also I think it's a serious problem which we need to address. While implementing control measures against black money, especially with regard to foreign assets or accounts held abroad, we realized that there were certain legal loopholes, there were certain deficiencies in the existing law. So therefore, government has decided that to deal with illegal foreign assets held by Indians, illegal foreign accounts held by Indians, we need a more effective law. And keeping that in mind, this law has been designed. It is made stringent. Yes, it is designed to be made stringent, because black money is something, it's a scourge of the society, and we cannot achieve poverty elimination, or we cannot address the problem of inequity unless this problem of black money is fully controlled. So therefore, the provisions which will be contained in this act have been spelled out, the highlights have been spelled out by the finance minister. This is meant to give a signal to the people, and also to those especially who stash illegal wealth abroad, to give a strong signal to them that this is the stringent law, and either you fall in line or face the consequences. And you have to remember that from 2017 we have this automatic exchange of information agreement which is being signed by all the countries. It's a multilateral agreement whereby information about bank accounts held by Indians in other countries, and similarly bank accounts held by foreign citizens in India, all this information will be exchanged between India and the other countries, and it's a multilateral arrangement. So after 2017 we are going to get all this information. Right. In the meantime, we are going to come out with this stringent law. Having said that, I would also like to mention that, and the finance minister has already earlier today mentioned it in your channel in the earlier part of the day,
that a compliance window for a very short period of a few months will be given, whereby those who want to come clean, those who want to, those who are currently owning illegal assets or illegal accounts abroad, an opportunity, a one-time opportunity will be given to them to come clean, declare to the government that this is the account I have or this is the asset I have, and they will have to pay the required penalty and the interest, and they'll have to bring back that money into India. इसके लिए समय अवधि क्या है सर? आपने क्या दिया है? ये अगर ये इसको माने कि एमनेस्टी, ये जो इसका जो डिटेल्स है, ये एमनेस्टी नहीं है. अच्छा. लेट मी वेरी क्लियरली से दैट इट्स नॉट एन एमनेस्टी स्कीम, इट्स ए कंप्लायंस विंडो. ठीक है. और इसका इट विल बी फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फ्यू मंथ्स. कितने महीने की ये होगी, वो जो नया, व्हेन द न्यू लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, व्हेन द न्यू बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, इट विल बी स्पेल्ड आउट. So, has there been, there are a lot of figures going around as to how much black money there is in the economy. Is there some, official kind of understanding as to how much black money can be brought back? You see, it's, my guess is as good or as bad as anybody else. And it's very difficult to estimate. There are no official estimates, because if there is an estimate, then we should be able to track and bring back that money. But after 2017, it's going to be very, very difficult for people to hold, assets abroad without declaring it to the, to the country in which they are a taxpayer. It's going to be very, very difficult after 2017. So now there is an opportunity for people, and in advance we are bringing about this law so that we are well set to deal with the situation which arises, the kind of information which we will get after 2017. Today there are limitations in exchange of information. For example, आप देखिए with regard to Switzerland, ये जो HSBC लिस्ट जो पॉपुलरली कहा जाता है, हालांकि मैं कोई बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये पॉपुलरली उसको HSBC लिस्ट कहते हैं, वो जो 628 नेम्स है, उसमें पहले इंफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत सारे कठिनाइयां थे. There were a lot of problems in getting information. बट लास्ट अक्टूबर, इन अक्टूबर 2015, और इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच में भी जिक्र किया है, हमने एक डेलीगेशन वी टुक, एंड इंसिडेंटली आई वाज लीडिंग दैट डेलीगेशन. We talked to the Swiss authorities, and 3-4 points में they have now opened the window and they are ready to share information with us. तो अभी जो है एक हर एक कंट्री के साथ अलग अलग हमको नेगोशिएट करके इंफॉर्मेशन लाना पड़ता है, जो कि बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है. लेकिन 2017 के बाद ये एक बिल्कुल ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा. तो इस देश में अगर ब्लैक मनी को फाइट करना है, और इफ वी हैव टू कंट्रोल ब्लैक मनी, देयर वाज अ नेसेसिटी फॉर making our legal provision more stringent, and at the same time give an opportunity for people who want to come clean and who want to comply. Mr. Das, we are becoming the fastest growing economy in the world. Shortly we're going to overtake China, and that's going to have an effect on tax revenues, isn't it? Because there'll be a good tax GDP ratio. So what are we looking at in the future in terms of we have a good, we're supposed to in 3 years reach 3% for our fiscal deficit targets, and does that look good because of the growth? You see, first thing is, I do not like to compare this India. I do not like to enter into this India-China comparison. We are a country in our own rights, and we have to look at ourselves, how good, how bad we are doing. Now, with regard to the tax GDP ratio, unfortunately our tax GDP ratio has remained quite flat, quite constant at around 10%, excepting 2007-8 when the growth rates were about 9% and plus. Okay. When our tax GDP was about 11.7, almost 12%. That was the highest ever. But other than that, that was an outlier. But other than that, our tax GDP has been in the range of 10%. Now we have to improve that tax to GDP ratio. Two things are happening. One, with the introduction of GST, there is going to be buoyancy in tax revenues. Second, the announcement by the finance minister that the corporation tax rates will be reduced from 30% to 25%, and it will be accompanied by a phased reduction of all exemptions and all various kinds of incentives which are given. That will definitely contribute directly to widening our tax base, and also in improving our tax to GDP ratio. टैक्सेस को लेकर के दिशा क्या हम डायरेक्ट टैक्सेशन से इनडायरेक्ट टैक्सेशन की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है सर?
नहीं, ऐसे बात नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम जो है जीएसटी है, वो जैसे कि पहले कहा गया है, वो आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और उसको 1 अप्रैल 2016 से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने कार्रवाई करनी चाहिए, जितने प्रिपैरेटरी स्टेप्स करनी चाहिए, ऑल दोज एक्शंस आर बीइंग टेकन एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। डायरेक्ट टैक्स की जब बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल टैक्स के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई मतलब बजट में जो राहत दी है इंश्योरेंस के लिए और बाकी जो इंडिविजुअल मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए, ही हैज अनाउंस सम मेजर्स। अदर देन दैट, in direct taxes, now we want to widen the tax base by removing the various kinds of exemptions which the corporates enjoy. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि because of the exemptions, there are maximum number of tax litigation and tax disputes. आप हमारा इनकम टैक्स का आप अगर टैक्स डिस्प्यूट्स अब एनालाइज करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन ये एग्जेम्पशंस के लिए है, क्योंकि वो एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो क्वेश्चन करते हैं और उसमें से वो लिटिगेशन बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, फोकस दोनों टैक्स पे है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच में कहा है, जीएसटी इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव पीस of legislation and in direct taxes ये जो 30% to 25% रिडक्शन है, जिसका रोड मैप फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगले 4 साल में वी विल रीच 25%. दिस इज ऑल्सो ए वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी. I think Ajay was, talking about more of the philosophy of direction, in terms of, because, what the finance minister did say is that this unleashes a lot of employment potential with the corporates as well. And so when you reduce a lot more direct taxes, then they can employ much and more people. So, in the future, maybe long down the road, perhaps we could do away with it. But also, a few other measures which the finance minister has announced. The list is very long. I don't want to take much time, but I'll give you a very small example. This pass-through facility which the finance minister has given with regard to the alternative investment funds. What is it? Alternative investment funds are basically pooled vehicles. When you provide them the pass-through facility, what it means is that the tax will not be in the hands of the fund, but it will be in the hands of the investor. So this will increase the capability of these pooled vehicles to mobilize more resources and invest in 4 categories of investment. एक है SME funds, तो small and medium enterprises के लिए है. एक है social projects, तीसरा है infrastructure projects, and fourth and very important, private equity में. Today there are many startup companies, lot of youngsters, lot of entrepreneurs who need equity. Big companies can mobilize their own equity and start a new business. But if there is a young entrepreneur coming fresh out of IIT or from an engineering college or some professional who is working abroad, he comes back and he wants to start a new venture, from where does he get equity? Private equity funds play a major role there. So that is the kind of thing which has been unleashed. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया की साथ साथ मैनेज इन इंडिया को भी इस पास थ्रू टैक्सेशन के जरिए आपने फोकस किया है. लेकिन सर, आम आदमी ये कह रहा है, सभी लोग ये सवाल कर रहे हैं, साहब हमको तो टैक्स के मोर्चे पे कुछ मिला नहीं, टैक्स में कुछ कमी नहीं हुई, टैक्स रेट्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ, टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाई गई, हमारे लिए तो इस बजट में कुछ नहीं है. उनके लिए क्या जवाब है? इसी पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2 लाख से 2.5 लाख किया था, 80C को 1 लाख से 1,50,000 तक इंक्रीज किया था, और जो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो डिडक्शन फ्रॉम 1.5 लाख इट वाज इंक्रीज टू 2 लाख. इस साल 14 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस हैव कम, and the devolution to the states, the share of the states has gone up from 32% to 42%. हिंदुस्तान के हिस्ट्री में किसी भी फाइनेंस कमीशन इतना इंक्रीज नहीं दिया है. आप अगर सारे फाइनेंस कमीशन देखेंगे 1%, 2%, 2.5% इंक्रीज देते थे. इस फाइनेंस कमीशन, ये बहुत दिस अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, इसमें कोई गलती नहीं है. इट्स अ राइट थिंग विच द फाइनेंस कमीशन हैज डन एंड गवर्नमेंट हैज वेरी बोल्डली एक्सेप्टेड दैट रिकमेंडेशन. तो ये जो 10% एक्स्ट्रा जा रहा है स्टेट के लिए, इस साल गवर्नमेंट का जो फिजिकल अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं था. लेकिन जैसे वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा है, एज एंड व्हेन the financial ability, the fiscal space improves, the middle class has a lot to look for, and government will certainly in the budgets to come give more relief to the middle class taxpayers. Ms. Jory, you mentioned that you will be waiting for the market conditions to be good.
Now, I mean, this waiting, could it delay a lot of your plans? No, I was not. I mean, since you have a roadmap to collect 69,500 crores in the fiscal, you said it will be going on all the time as well. You see, we've identified a lot of stocks. We're getting approvals. We're creating a pipeline. Sure. You wait for that particular sector to look good. It doesn't mean you hold up the other sectors. I mean, like for example, financials may be good today, or the power sector may be good, or whatever. So there's a range of stocks to choose from. The particular stock you take up at a point of time is when the market for that stock is good. Earlier, what used to happen, you had limited stocks, so you were constrained by those limits. Now we have many more stocks in the pipeline, so you can afford to make it more sensitive to the market. चलिए, तो वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दस मुकदिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शक्तिकांत दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में डीडी न्यूज पर खासतौर पर वक्त निकालने के लिए। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे है हमारा खास पैनल जिस पर हम चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या मिला और क्या उससे रोजगार की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं। चर्चा मेक इन इंडिया पर कहीं मत जाइए और देखते रहिए खास कार्यक्रम बजट ऑफ होप। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं बजट ऑफ होप, और इस वक्त हम दो बहुत ही खास मेहमानों के साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। हमारे साथ है सीएम वासुदेव जी, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और तमाम पदों पर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ है अजय साहा जी, जो कि डीजी हैं एंड सीईओ FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। वासुदेव जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आम बजट पर और तमाम विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। आपने भी बहुत सारे जगह चर्चा की। क्या आपको फीडबैक मिल रहा है पूरे देश से जब आपने तमाम एक्सपर्ट्स को सुना, तमाम टेलीविजन चैनल्स पे आपने चर्चा की? फीडबैक तो खैर अपनी जगह है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जो माहौल है अर्थव्यवस्था में बहुत फेवरेबल है इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, तो सारी अच्छी चीज़ें हैं इकोनॉमी में। तो सब उम्मीद कर रहे थे कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हर साल पिछले सालों में ये रहा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, फिजिकल डेफिसिट हाई है, तो ट्रेड ऑफ है कि ये ग्रोथ करें या इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। ये सब समस्याएं इस दफ़ा नहीं थी, तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के लिए अच्छा बेस था, लोगों की उम्मीद थी, और वित्त मंत्री ने मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश किया है। Mr. Vasudev, why do you say growth oriented? What specifically do you see in the budget that is pushing growth? I mean, from the infrastructure point of view, there's 70,000 crores that are going to be spent this year, which is in addition to the capex of, which is quite high. I mean, huge amounts of money. 3,17,000 crores is the capex of public sector companies. Then there is also the talk of these 5 mega projects, power projects of 4,000 crore rupees, ultra mega power projects, which would unleash about 1 lakh crores into the economy. What do you say? No, when I say it's a growth-oriented budget, it means how do you have growth? You have savings, and then you invest, and investment leads to growth. So this budget has a lot for increasing the savings in the economy. It has a lot for investment, whether domestic investment or foreign investment, whether public investment or crowding in private investment, creating a new infrastructure investment fund, the power ultra mega projects that you are saying. Then there is also, I think, a lot of emphasis on investment by the public sector enterprises outside the budget, so to say, using their own resources, extra budgetary resources as they are called, by leveraging their own assets, borrowing more from the market. There's a lot of emphasis on that. And the most, I think, exciting prospect, I think, of which he has held out a hope, is the port sector. The port trust that we have in India, they are sitting on large assets, and there is no way to leverage those assets by borrowing. If those assets were available in the private sector, they would leverage and raise so much money. So he has given this idea of corporatizing the port trusts,
And if the port trusts are corporatized, you can imagine it can leverage thousands of crores of investment. So I think it is a combination of public investment, it is a combination of new institutional mechanism for more investment, it is a combination of reining in private investment, crowding in private investment, and he's also held out hope for revisiting the public-private partnership model. So these are very good things for the growth of the economy. Mr. Sahai, since we talked about ports, it automatically brings into mind import-export. What is in it for your sector? In fact, there are a couple of measures which are directly for the exports, and there are indirect measures also. On direct export front, I'm looking very positively towards the announcement which has been made that they will facilitate manufacturing in CMLV countries, which will help India to enter into the global and regional value chain. And it will also help India to increase its exports, because I don't perceive that the whole manufacturing will be done in CMLV country. Part manufacturing will be done in India and part will be done in CMLV country. There were some issues with regard to the utilization of the Senvet credit for the export sector, because export sector was not in position to utilize within 6 months' time. So they have extended it to 12 months. There was problem on the service tax on movement of goods from factory to the customs stations. Right. So exemption has been provided for that. Indirect measures include some of the issues which relate to ease of doing business. For example, they have told that now the registration of the service tax and central excise will be done in 48 hours time, which is required for the export sectors also. We are talking about digitally signed invoice, which will help the export sector also. And on the ports also, because we feel that ports are very important in carrying out the whole exports and import transactions. Absolutely. And World Bank has said that each day delay at the port add to around 0.5% in the export value. So if for any reason my consignment is delayed at the port for 10 days, I lose 5% of my FOB value, and in the current environment, when the whole business is transacted at 5 to 7%, this make you totally out of the business. Right, let's take a another short commercial break, and when we come back, we'll wrap up this discussion with final comments. फिर वापस लौटते हैं इस चर्चा में, और वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा आप दोनों जेंटलमैन। वासुदेव जी, आपके फाइनल कमेंट्स क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? मैं दो एक चीजें कहूंगा बहुत संक्षेप में जी। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट वाकई ग्रोथ ओरिएंटेड, तो जैसे मैंने पहले कहा, मगर थोड़ा सा पैकेजिंग इसका अगर बेहतर होता तो ये जो परसेप्शन या धारणा बन रही है कुछ क्षेत्रों में, ये प्रो कॉर्पोरेट सेक्टर बजट है जिसमें आम आदमी की आवश्यकताओं का ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया, ये वास्तव में सही नहीं है ये कहना जी। मगर वो पैकेजिंग जैसे किया गया, जैसे आपने इसमें कर दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25% 4 साल में किया जाएगा, मगर साथ साथ ये भी कहा कि जो एग्जेम्पशंस हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स से, वो भी आप उसको कम करेंगे। तो ये बताना चाहिए था कि दोनों चीजों को अगर कंबाइन करके देखें तो इट इज रेवेन्यू न्यूट्रल, सरकार के बजट को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा साथ साथ ये जो उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया है इनकम टैक्स आम आदमी के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया, ये पैकेजिंग की ये भी बहुत, और जो सर्विस टैक्स 12 से 14% कर दिया, उससे भी बहुत, उसका भी पैकेजिंग। सो मैं समझता हूं कि सरकार, वित्त मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती ये है कि इसका कम्युनिकेट कैसे करें लोगों को कि बजट के पीछे मंशा क्या थी, क्या उसका अर्थ है, ताकि इस प्रकार की भावना न पैदा हो। उस बजट को बनाया गया कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अजय जी, जहां तक बजट का सवाल है, हमें लगता है बजट में काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। जो हमें थोड़ी सी कमी लग रही है वो है इनोवेशन फ्रंट पे। एक इनोवेशन AIM की स्कीम बनाई गई, 150 करोड़ देने से उसमें हमें नहीं लगता है। हम इनोवेशन में बात कर रहे हैं, R&D में बात कर रहे हैं, हम 0.8% GDP का स्पेंड करते हैं, वो 2% पे हमें ले जाना है। तो मैं इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा कर रहा था। और जहां तक एक्सपोर्ट सेक्टर का सवाल है, हम CZ के लिए मैट और DDT में कुछ छूट या उसको एबॉलिशन देख रहे थे, जो इसमें नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो ये जो बजट कहता है कि सरकार राउंड द क्लॉक और राउंड द ईयर सरकार है, तो बजट की तरफ आप सारे सवालों के जवाब के लिए मत देखिए, पूरे साल इंतजार कीजिए, क्योंकि मौके अभी बहुत से हैं जिसमें इन सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मार्क को दीजिए इजाजत। नमस्कार।